I hope I am audible to all, and I extend a warm welcome to each of you for this Zoom meeting that promises to be an insightful exploration of the importance of private publications, books in education. Your presence is highly valued as we delve into multifaceted aspects, including resource building, availability, technology integration, and the alignment with the National Education Policy 2020. This gathering provides an opportunity for collaborative discourse how private published books contribute to resource enrichment within our educational institutions. We aim to explore the role these materials play in fostering a dynamic and effective learning environment. I would like to appreciate all of you for being here to discuss your ideas, the experience you are having with the private publishers, and the impact it has upon the education system. So, once again, I welcome all of you for this Zoom meeting, which is going to be a fruitful session for all of us. I hope so. So, my first question it goes to Mr. Jianwar, President, Private School Education, Jammu and Kashmir. Welcome, sir. And I'd like to ask you, how do private publishers play an important role in resource building for schools? And what impact does this have on the overall educational environment? Sir, please, आप अपने ideas हमारे साथ share कर लीजिए. Thank you, Shaukat Saab, for this wonderful session. See, if we see the role of publishers, publishers are older than schools. Initially, when the dissemination of knowledge took place, it was through publishers. You might have heard a very important quote. Some people say that's a hadith. I don't know whether that's a hadith or not, but it's generally said that seek knowledge even if you had to go to China. Utlibul ilma walau kana bisin. Simple question is, why, if it's a hadith, why Prophet asked his followers to go China for seeking knowledge? Even if they have to travel to China, they should go. If we see the philosophy behind this quote or hadith, it's very clear. Books, firstly, were published in China. First printing press established in China. The pen, it was invented in China. For the dissemination of knowledge, you need three things. First, to write on something, there's a paper. It again was invented in China. You need a pen, and its advanced form is the printing press, because by pen you can write few books. But when it comes to large scale publication, dissemination of knowledge at a very, very large level, obviously printing press has to come into play, and China invented that. Means that for education, for a knowledgeable society, the publication has a very important role. That's why books were revered all the time. Books were respected all the time. And it is said that pen and book is the only thing which has a respect, which has an honor, which has a regard, which has a regard throughout the history. Now see, currently, a campaign has been, I can't say that whether this campaign has been created or it has been designed, or somebody is at the back of it who has obviously done this campaigning, that we have been projected in a way that publishers are school owners. Virtually, they are no stakeholders. Stakeholder is a bureaucrat sitting in a drawing room, in a very cozy, in a very air-conditioned room. Then the second stakeholder is obviously that vicious media who aim to malign this book keeping, book selling, book producing, book publishing
these organizations and then schools in a bad taste. That's why when we go by the orders which have been issued right for the last 3 years, you see, it's not the only first time. Firstly, it was in the time of Mr. Naeem Akhtar, who passed an order that schools will prescribe only J.K. Bose books. My simple question is, and I have been telling for the last 5 years continuously, let board publish its list of textbook writers. I am on the governing body of board. Being obviously, I was attending all the governing body meetings of JK Board of School Education. I know the policies, I know the ins and outs, I know the system. So on that basis, I can say that board cannot match the private publishers which are publishing books. Obviously, the role of publishers is primary. First, it is publishers, then comes schools. Our problem is that we don't give due credit to these publishers who have worked for centuries together, upholding the dignity of pen and book and creating a knowledge society, contributing towards creating a knowledge society. The present order, obviously, is nothing but a well-calculated, a well-designed, it's a conspiracy to shatter the whole educational scenario of Jammu and Kashmir. For the last 2 years, Yes. literacy rate has come down by 10% already. Literacy rate in Kashmir was 89%. Right now it is 79%, 10% down. Now, banning these books and saying that you prescribe board books obviously is to sabotage the increasing trend, educational development trend, in which publishers are playing a very rightful role, a very productive role, and then it's the backbone of this whole schooling system. So my take is simply that if you minus publishers, it's a direct attack on education, because publishers are the backbone of whole education system. Thank you. Exactly, Wasam. Thank you so much for the realistic and the valuable feedback about the same issue. My next question is for Mr. Satpal Mansotra, who is General Secretary, Jammu and Kashmir Private School Association. Sir, how do you assess the role of private publisher books in enhancing the quality of education within the school, and what consideration guide your decisions when selecting educational materials from these publishers? आप अपने सर आइडियाज हमारे साथ इस बारे में शेयर कर लीजिए, बिकॉज आप भी एक बॉडी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लीज सर। शोकर जी, बात ऐसे है जी कि सर। जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, जब भी अपना कंटेंट छापते हैं तो वो जो डिमांड ऑफ मार्केट होती है उसके हिसाब से, एज फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो जो प्राइवेट पब्लिशर हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बीच में कंटेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट है, इन्होंने उनको अपडेट कर लिया, उनको एडिटिंग करके, और बिल्कुल इनकी बुक्स जो है वो रेडी है। और उसके अगेंस्ट में हम बोर्ड की बुक्स देखें तो इनकी बोर्ड की बुक्स जो है वो पुराने सिस्टम की है, जो हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो आजकल प्राइवेट पब्लिशर की तरफ से जो भी बुक्स आ रही है उनका वो डिजिटल कंटेंट साथ में देते हैं। नंबर तीन, कि जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है अपनी बुक्स के साथ साथ उसको कैसे पढ़ाना है, ये हमारे टीचर्स की भी ट्रेनिंग देते हैं। और जो टीचर्स को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है लेसन प्लानिंग की। आजकल जितने भी पब्लिशर, जहां पर भी हम इनके सेमिनार्स में जाते हैं या ये आ रहे हमारे पास आते हैं, तो ये टीचर्स का जो पूरे साल टाइम टू टाइम लेसन प्लान भी साथ में देते हैं। और इनकी बुक्स के बीच में जो
पेपर क्वालिटी होती है, जो पिक्चर क्वालिटी होती है, वो बहुत ही बढ़िया किस्म की होती है एज कंपेयर टू जो हमारी बोर्ड की बुक्स हैं। तो इसमें मैं ये मानता हूं कि जो प्राइवेट पब्लिशर है इनका आपस में भी एक इंटरनल कंपटीशन होता है। मार्केट के हिसाब से ये भी जो इस समय कंट्री की डिमांड है उसके हिसाब से ये अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं, और जिसका मुकाबला अगर मैं गवर्नमेंट के साथ करना चाहूं तो जो गवर्नमेंट की बुक्स है वो नहीं कर सकती। लेकिन दूसरे ढंग से देखूं कि जो हमारा परमिशंस होती हैं, आर्डर्स होती हैं, गवर्नमेंट के साथ है, बोर्ड के अंडर होती है एफिलिएशन, और बोर्ड वाले ये सोचते हैं कि ये हमारे अंडर, हम जैसे मर्जी इनके ऊपर जो भी आपका अपना कानून थोपना चाहेंगे हम इनके ऊपर थोप सकते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ना ही हम ऐसा होने देंगे। अपनी लड़ाई जो है इसमें पूरी लड़ेंगे। तो प्राइवेट जो बुक्स है इनका कोई जो ऑपरेशन भी करनी होती है, जब भी कोई चेंजेस आती है तो उसकी ऑपरेशन भी बड़े टाइम के कर लेते हैं और मार्केट में अवेलेबल है। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने बिल्कुल सही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो खुर्शीद जान साहब के लिए रहेगा, जो कि डायरेक्टर हैं केबीटी बुक्स के। जान साहब, चूंकि आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरी कंट्री में अपनी बुक्स को सप्लाई करते हैं, तो आपको क्या फर्क लगता है जब आप सप्लाई करते हैं हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में और जम्मू एंड कश्मीर में? क्या डिफरेंस लगता है आपको? किस तरीके से वहां सिलेक्शन प्रोसेस होता है और क्या इश्यूज वहां के और यहाँ के डिफरेंट है एक दूसरे से? जी शौकत, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, पिछले 12-14 सालों से मैं बाहर की मार्केट कर रहा हूँ और जम्मू कश्मीर की मार्केट कर रहा हूँ। जम्मू जी सर। कश्मीर में जब भी हमने मार्केट किया हुआ है तो यहाँ पे हर कदम पे हमें अड़चने पैदा की गई है। एज वेल एज जब हम बाहर जाते हैं, आप पठानकोट से आगे ले लीजिए कोई भी स्टेट, मैं तकरीबन आधा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ, वहां पे हर जगह वेलकम होता है इन बुक्स का जो हम लेके जाते हैं, उस मार्केटिंग का जो हम करते हैं। जहां भी हम जाते हैं वहां पे हमारी किताबों को सराहा जाता है। गवर्नमेंट का कोई वो मतलब रोल नहीं होता है वहां पे, बल्कि हमने देखा हुआ है 9th 10th 11th 12th की क्लासेस में जो एडिशनल बुक्स वहां पे यूज होती है वो भी प्राइवेट पब्लिशरों की होती है एज अ रेफरेंस बुक्स। प्राइवेट पब्लिशर मतलब हम जहां भी गए, जो स्कूल भी गए, वहां पे काफी सराहाया गया है हमारी किताबों को। और वहां पे हुकूमत की तरफ से या वहां पे लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं है, बल्कि हमेशा जी सर। हमेशा वहां पे वेलकम रहा है। अभी हाल ही में मैं करीबन 25 दिन के टूर से वापस आया तो मैं जी यहाँ कश्मीर के अंदर अजीब सूरत हाल देखी कि यहाँ की गवर्नमेंट हमें वो एक रुकावट डाल रही है, नहीं जी यहाँ पे प्राइवेट बुक्स नहीं बिकेंगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम, आप लखनपुर से आगे ही ले लीजिए, कहीं भी चले जाइए, मैं इस टाइम बिहार घूम आया, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, किसी भी जगह कोई ऐसा इशू नहीं था। हाँ, 2-3 साल पहले एक इशू हुआ था झारखंड में, लेकिन जब झारखंड के लोगों ने वहां के गवर्नमेंट की किताबें देखी तो उन्होंने एक ही साल में उन किताबों को रिजेक्ट किया और रिप्लेस किया, सेम सीजन में रिप्लेस किया उन किताबों को कि हमें ये किताबें नहीं चाहिए, ये बिलो स्टैंडर्ड किताबें हैं। उनकी प्रिंटिंग या उनकी क्वालिटी वो मतलब बिलो स्टैंडर्ड थी। तो 6 महीने के अंदर अंदर ही वहां पे स्कूल वालों को मजबूरन कोर्स चेंज करना पड़ा। तो हमारी मतलब जो यहाँ की मार्केटिंग है अजीब गरीब सूरत हाल है इस टाइम, क्या करे क्या ना करे। लेकिन अदरवाइज जो भी बाहर के जो भी जितने भी मार्केटिंग हम कर रहे हैं बाहर की या बाहर सप्लाई करें, वहां ऐसा कोई इशू नहीं है। जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो अभी आपके जो वैल्यूबल फीडबैक हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खुर्शीद साहब के लिए, खुर्शीद महाजन साहब, जो कि मेंबर हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के। खुर्शीद साहब, क्योंकि आप सिलेबस करिकुलम वगैरह टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में काफी इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर लीजिए और द चैलेंज यू हैव बीन फेसिंग इन योर स्कूल।
खुर्शीद साहब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम शौकत जी साहब, वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका कि आपने बड़े एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन को आज लिया हुआ है, जहां पे हमारी फ्यूचर जनरेशन का स्टेक पे लगा हुआ, उनका मुस्तकबिल स्टेक पे लगा हुआ है। जहां तक ताल्लुक है सिलेबस का, जो प्राइवेट पब्लिकेशंस के थ्रू आता है वो हमेशा तो अपडेटेड होता है। उसमें अभी हमारे 2-3 साथियों ने ऑलरेडी उसमें ब्रीफ किया, मैं उसके बगैर मैं कुछ आपसे जिक्र करूंगा इसके बारे में। अगर हम देखेंगे ना डाउन द लाइन पीछे, बोर्ड की जो 11th और 12th की इंग्लिश की बुक्स आती थी वो आती थी प्राइवेट पब्लिकेशन, चिनार 1 और चिनार 2 कैम्ब्रिज पब्लिकेशन से। तो जरूरत क्या थी बोर्ड को उस टाइम पे, क्योंकि बोर्ड को भी ये लगा था कि नहीं इंग्लिश उस लेवल का नहीं है, तो कैम्ब्रिज पब्लिकेशन का इंग्लिश आता था। 9th 10th 11th 12th गीता पब्लिकेशन नागराज का वो आ रहा था, इंग्लिश ग्रामर आता था। 8th क्लास का इंग्लिश ग्रामर गोयल ब्रदर्स प्रकाशन का आता था। और इसके बगैर में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल मैं स्मार्ट क्लास की हम बात करेंगे, आज की डेट के अंदर गवर्नमेंट स्मार्ट क्लासेस का अब इंट्रोड्यूस कर रही है पिछले 2-3 सालों से, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये ऑलरेडी 2010 में इंट्रोड्यूस हो गया। और उस टाइम पे जो प्राइवेट पब्लिकेशंस थी, उन प्राइवेट पब्लिकेशंस ने अपने कंटेंट को उसी टाइम पे डिजिटल किया था। तो उस डिजिटल कंटेंट के कारण बच्चों को समझाने में हमारे को आसानी होती थी। और उसके बगैर में अगर हम अब देखें कि किस पेस के हिसाब से दुनिया चल रही है, आज हमारा बच्चा जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में है वो फर्स्ट क्लास में कोडिंग पढ़ रहा है, मेरे को फर्स्ट क्लास में इंग्लिश को बच्चे को ABCD पढ़ाना है। कल को मेरा बच्चा कहाँ पे compete करेगा इस बच्चे के साथ में। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे जो भी ऑनलाइन टेस्ट आते हैं, ये पूरा क्यूआर कोड स्कैनिंग, ये सभी डिजिटल कंटेंट प्राइवेट पब्लिकेशंस की इसमें बुक्स में है। तो अगर हम देखेंगे उस हिसाब से बोर्ड और ये कहीं पे कंपैरिजन ही नहीं है इसमें मेरे हिसाब से, क्योंकि जो प्राइवेट पब्लिकेशंस है उनका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने के कारण वो अपने कंटेंट को, अपने उसको सिलेबस को अपडेट करते रहते हैं विद टाइम। तो अगर मैं और एक चीज आपको बताऊं, अभी 10th क्लास का सिलेबस डिलीट हो गया, बोर्ड की आप 10th क्लास की मैथमेटिक्स बुक उठा के देख लीजिए, वो वही पुरानी किताब है। बच्चा जब क्लास में जाता है उसके ऊपर और कंफ्यूजन, ये चैप्टर टॉपिक में सिलेबस में है कि नहीं है। तो ये उस हिसाब से बोर्ड के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपना जो वॉल्यूम है काफी ह्यूज अमाउंट में प्रिंट करवाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो उनकी अपडेशन ऑफ बुक्स भी होती है वो मेरे ख्याल से 10 साल के बाद में। और सबसे बड़ी बात, जो बोर्ड की बुक्स है वो इट्सल्फ बोर्ड की बुक्स नहीं है, ये NCERT की कॉपी बुक्स है। अच्छा, अब आप देख लीजिए जो बच्चे 9th 10th 11th 12th जो नीट IIT JEE की कोचिंग करते हैं, उनके पास में कौन सा मटेरियल रहता है? उनके पास में आज के लिए प्रदीप है, S चांद है। अगर आपने भी देखा होगा पिछले 10 साल पहले यहाँ पे 9th 10th में S चांद की एक साइंस की रेफरेंस बुक हुआ करती थी, लक्ष्मीत कौर और मंजीत कौर। आज की डेट के अंदर भी बच्चे वही पढ़ते हैं। अगर बोर्ड की बुक इतनी लेवल के ऊपर है तो फिर बच्चों को प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक हमारे को ये देखना है कि हमारे को अपने बच्चों को लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ पे देना है, क्योंकि कल इसी बच्चे को रेस्ट ऑफ द इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ में कंपटीशन करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमने बच्चों को उस लेवल पे लेके जाना है कि ताकि वो कल को कंपटीशन में आ जाए। और पहले हमारा यहाँ पे कुछ जो 370 के कारण रिजर्वेशन थे वो तो अब खत्म हो गई। अब अगर हमारे को इस चीज से कोई भी ये नहीं है कि 1 नेशन 1 सिलेबस, अब लेकिन अगर हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के अंदर प्राइवेट पब्लिकेशन बैन नहीं है, सो व्हाई J&K सिंगल आउट है इसमें? तो उस हिसाब से सर हम इस बारे में अभी हम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इस बारे में अभी हम जो एडवोकेट साहब हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ी देर में मैं उनसे भी फीडबैक लेने वाला हूँ इस बारे में कि क्या वजह है कि अगर किसी जगह दूसरे रूल्स हैं और यहाँ पर ऐसे रूल्स नहीं है, तो उस बारे में मैं उनसे फीडबैक। लेकिन आपका एक वैलिड पॉइंट है जो आपने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड करी, और स्पेशली AI, जबकि आजकल पूरा देश AI की बात करता है, AI इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा जो रोल देखा गया है प्राइवेट पब्लिशर्स में शौकत कंपैरेटिवली साहब, ज्यादा देखा गया है। सॉरी टू इंटरवीन,
11th जी और जी सर। 12th की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक ही नहीं है बोर्ड के पास में। अच्छा अगर बच्चे को बाजार से जाने बुक ही नहीं है अवेलेबल, बोर्ड बोलता है हम जी पब्लिश ही नहीं करते हैं किताबें। क्यों? बिजनेस मैथ्स में वॉल्यूम नहीं है बच्चों का ज्यादा, अच्छा सिलेबस है, सब्जेक्ट है, लेकिन बुक नहीं है। सो दैट इज द हाइट विद द सिस्टम। जी, थैंक यू सो मच खुर्शीद साहब, बिल्कुल वैलिड पॉइंट रेज करने के लिए। ना अभी मैं जो पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा वो गुलजार साहब से लेना चाहूंगा, क्योंकि गुलजार साहब सीबीएसई के साथ जुड़े हैं। ही इज द सिटी कोऑर्डिनेटर सीबीएसई साउथ कश्मीर। तो क्या वजह है गुलजार साहब कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में आपको ऐसा डिफरेंस दिखता है एंड हाउ डू यू एज सीबीएसई स्कूल प्रिंसिपल view the importance of CBSE board in shaping the educational landscape, and how does the curriculum flexibility provided by CBSE allow for the freedom to choose books that align with the school's educational goals? Sir, you are not audible. There is distortion Sir, voice. I'm not getting I your am question, saying sir. as the CBSE as a board is more flexible towards the books which are being used by the school CBSE schools, how do you see the importance of CBSE board in shaping the education landscape, keeping that thing in mind that they have a freedom in choosing the books? Dear Shaukat Saab, first of all, I'll tell you that CBSE is a board and NCERT is a publisher. You know, Ji. CBSE, the official communication from CBSE is that you have to implement NCERT books only. Because when we go for the inspections, when CBSE goes for the inspections, वहाँ पे वो ज़्यादातर तरजीह देते हैं जब भी लाइब्रेरीज का इंस्पेक्शन होता है या क्लास रूम्स का इंस्पेक्शन होता है, तो फर्स्ट से लेके 12 तक यही देखा जाता है कि आपकी जो बुक्स है वो एनसीईआरटी की ही बुक्स होनी चाहिए। लेकिन इस पे वो रिकमेंड कर रहे हैं, दे आर नॉट फोर्सिंग अस, और उसके लिए कोई एक अलग सर्कुलर नहीं निकला है कि आप इम्प्लीमेंट कर लो सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स। अगर देखा जाए मैक्सिमम सीबीएसई स्कूल्स में प्राइवेट पब्लिशर्स की ही बुक्स है। और अगर देखा जाए जैसे अभी महाजन साहब बोल रहे थे कि आईटी कंटेंट, क्योंकि इस वक्त एक रेवोल्यूशन है आईटी के फील्ड में, तो आईटी कंटेंट या टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है प्राइवेट पब्लिशर्स इसमें रवा दवा है, और जो टीचर्स हैं वो ज्यादा फायदा उनको मिल रहा है प्राइवेट पब्लिशर्स से। और एनसीईआरटी भी इस वक्त अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है सीबीएसई से, दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट ओनली एनसीईआरटी बुक्स इन द स्कूल। Okay, and but there is no mandatory that only you have to use NCERT books, yeah, as far yeah. as I am getting out of it. They recommend They NCERT recommend, yes. books, but they don't force, and there is no such Yes. circular. Yes, in 2017 there was a circular issued by CBSE, wherein CBSE schools were told to they were recommended, but they were not forced. फिर उसमें एक मिसप्रिंट हुआ था, मीडिया ने उसमें निकाला था कि आप सीबीएसई स्कूल्स को वो करना है, इनको एनसीईआरटी की बुक्स ही मतलब परचेज करनी है। वो नहीं था, वो उसमें मसला नहीं था, वो सर मीडिया आपका से सर आपसे मैं एक चीज और इसमें पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप सीबीएसई स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं और हेड भी करते हैं। एक बच्चा एक ही स्टेट में सीबीएसई स्कूल में हो या फॉर दैट मैटर किसी भी अदर बोर्ड में हो, एक ही स्टेट में, और एक बच्चा हमारा जो जेके बोर्ड में होता है जहां पर बाइंडिंग होती है आपको कि एक ही पर्टिकुलर पब्लिकेशंस की बुक आपको यूज करनी है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? मैं चाहूंगा कि देखिए एज जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो एनसीईआरटी में इस बारे में जी मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव सीबीएसई रिप्रेजेंटेटिव इस पे मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि वो जी क्या लें, तो इसमें मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, आई एम फ्लेक्सिबल ऑन दिस Sure, sir. पॉइंट। I understand, sir. Thank you so much, sir, for your feedback. And my next question goes to Mr. Wasim Javed, who is managing partner, Oscar Publications. Wasim sir, welcome. And what do you think? How does the private publishers help government in implementing new education policy 2020? And what implications would the current decision by JK board lead up to? Exactly. Am I audible? जी 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 बिल्कुल, हम सुन पा Exactly. रहे हैं आपको वसीम साहब। जी, तो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें आज इस पैनल पे बुलाया।
अब आपकी बात रही कि जो आप कह रहे हैं कि एनईपी का क्या कंट्रीब्यूशन, जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही है उसका प्राइवेट पब्लिकेशंस का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस पॉलिसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट पब्लिकेशंस का एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एनईपी, वो ये है कि अगर हम पॉइंट आउट करें जस्ट J&K स्टेट को, तो इन द लास्ट ईयर एक ही साल में ऑलमोस्ट 1000 टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रखे हैं ओनली एंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जो कि एक प्राइवेट पब्लिकेशन ने ही कराए हैं रिगार्डिंग टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, देयर ट्रेनिंग्स एंड ऑल। और वो सभी ट्रेनिंग्स और वो सभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स ओनली एंड ओनली थे कि एनईपी क्या है, उसके रिपरकशंस क्या है, उसको कैसे अपने स्कूल्स में लागू करना है, उसको कैसे पढ़ाया जाए एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इन द क्लासरूम्स। और उस चीज की वजह से जो हमारे स्कूल्स में टीचर साहिबान है उनको बहुत ही एक फायदा मिला है उस चीज का। और उन्होंने वो बखूबी इस साल भी हम अगर देखेंगे 2023 में उन्होंने बखूबी वो चीज अपने क्लासरूम्स में अप्लाई की हुई है एंड दैट हैड क्रिएटेड वंडर्स इन द क्लासरूम्स। और दूसरी चीज जो है, जो कि एक प्राइवेट पब्लिकेशंस एक फैसिलिटेटर प्रोवाइडर है, जो कि एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अलावा डिजिटल रिसोर्स मटेरियल की बात करें, दैट इज द मेन थिंग दैट अ प्राइवेट पब्लिशर प्रोवाइड इन स्कूल्स। अगर हम बात करें तो हम वीडियो लेसन्स की बात करते हैं, तो दैट इज द प्राइवेट पब्लिशर हु इज गिविंग दीज थिंग्स इन द स्कूल। और अगर हम आज की डेट में अब बात करते हैं कि J&K स्टेट बोर्ड की ही बुक्स पढ़ानी है, जो कि हाल ही में एक ऑर्डर आया हुआ है J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से कि वो स्कूल्स को कह रहे हैं कि आप अपने स्कूल्स में हमारी ही किताबें इजरा कीजिए। तो आई थिंक इन माई ओपिनियन इट विल डिग्रेड द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल्स, क्योंकि ऑलरेडी J&K में जो स्कूल्स है उनने अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत ही हाई रखा हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट पब्लिकेशंस हु टाइम एंड अगेन हमेशा शाना बशाना स्कूल्स के साथ, स्कूल्स के टीचर्स के साथ काम करते आए हुए हैं, उनके दरपेश मुश्किलात को समझकर और उनका अजाला लेकर हमेशा। We talk of COVID, जब कोविड था it was only private publisher who did it by the ways of online classes and all। और आज की डेट में अगर हम मतलब ये बात करते हैं, the private publisher acts as a bridge between the students, school management and the parent also by means of its various digital mobile apps, जो कि कोऑर्डिनेटेड मोबाइल ऐप होती है। और अगर हम आज की डेट में ये कहते हैं कि एनईपी की ही बात करते हैं, इफ वी टॉक ऑफ एनईपी, तो एनईपी का जो ड्राफ्ट है अगर आप उसका पेज नंबर 17 देखेंगे, पैराग्राफ नंबर 2, उसमें एनईपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही कह रही है wherever possible a school can apply any book। ये एनईपी की खुद की ही गाइडलाइंस है कि जहां जहां पे स्कूल को मुमकिन लगे वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, अकॉर्डिंग टू हिज फिजिबिलिटी, वो अपने बच्चों को क्या मुवाफिक है उनके लिए वो पढ़ा सकता है। बट मुझे लगता है कि ये जो हाल ही में जो ऑर्डर आया है J&K बोर्ड की तरफ से, अल्टीमेटली हमें देखना है कि हम आगे जा रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं। पूरी दुनिया जब हम बात करते हैं, वी टॉक ऑफ 21st सेंचुरी, वी टॉक ऑफ स्मार्ट सिटीज, वी टॉक ऑफ स्मार्ट क्लासेस एंड ऑल, लेकिन हम बच्चे को वही चीज पढ़ा रहे हैं जो 10 साल पहले पब्लिश हुई है। और हमें मेन चीज ये देखनी है कि क्या अगर हम एनईपी पे बच्चे को ला रहे हैं, क्या जो हम बुक जो J&K स्टेट बोर्ड प्रोवाइड कर रही है, इज इट इन कंप्लायंस विद द एनईपी? दैट इज उस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है, उस पे मतलब जी, वो valid सोच question विचार is- जरूरत है कि मेन चीज है कि क्या वो एम्प्लायंस मतलब क्या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही है जो एनईपी हमें बोल रही है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी मस्ट डिस्कस। और एक जनरल पब्लिक को, पेरेंट को भी ये सोचना चाहिए कि भाई अगर हम जा रहे हैं, हम आगे के बजाय पीछे तो नहीं जा रहे। It is the public, it is the parent who must have to think about this, the civil society, क्योंकि at the end being a publisher we are parents also। कल को हमें यही बच्चे मत न पकड़ेंगे कि आप जब बोल सकते थे, आपने हमारी एजुकेशन को डिग्रेड कर दिया। तो गवर्नमेंट मस्ट हैव टू थिंक अबाउट दिस। जी, थैंक यू सो मच फॉर द वैलिड पॉइंट्स। आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस भी रेज करे हैं वो सबके लिए। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट द कमेंट्स बाय मिस्टर इरशाद रशीद, हु इज एडवोकेट J&K हाई कोर्ट।
Irshad Sahab, how can we make sure that the students across the country get to use the books from private publishers in their schools when some places, especially Jammu and Kashmir, have different rules about this? How do we balance the rules and make sure everyone gets a good education? Your comments about this, please. Thank you. Thank you so much for making me a part of this meeting filled with erudite and wise people. तो बेसिकली मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, एक कंटेक्स्ट, लेकिन जो मैं कंटेक्स्ट दूंगा आपको, आई थिंक यू पीपल आर वेरी वाइज एंड एरुडाइट टू अंडरस्टैंड माय कंटेक्स्ट एंड माय बैकग्राउंड ऑफ थिंग्स. Way back in 1990, the government of India suffered a major setback so far as its economy is concerned. तो हमारी कंट्री के जो फॉरेन रिजर्व्स थे, they were touching the very threshold limits. And what happened after that? The honorable prime minister of that time, the honorable finance minister of that time, Dr. Manmohan Singh, introduced a principle that was called the liberalization. He liberalized the economy. The private sector was given a free hand to enter into the economic zones. And what happened to the disinvestment policy, government, the regulation, subsequently, government of India attracted a huge amount of money which was lying idle, untouched in private sector. As a result, the foreign reserves of India touched limits, and presently the economy of India is giving tough fight, the world's most dynamic and the biggest economies of the world. That principle, I think, must be applied to the education sector, particularly in J&K, whereby the education policy must be liberalized to an extent कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इसमें एक मेजर रोल देना चाहिए. मुझे यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल याद आ रही है that the AAP government in Delhi, they sent their education minister Manish Sisodia to some countries whereby he studied their principle कि ये इनका एजुकेशन सिस्टम इतना सक्सेसफुल कैसे है कि इनके क्लासरूम्स में वो जो हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट पे नजर रखी जाए या उसको ऐसे कहा जाए आप ऐसे करो, उसको आप बुक्स दे दो, आपको जो स्कूल ने प्रेस्क्राइब करी हैं बुक्स, आपको जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करी हैं बुक्स, वो आप पढ़ लीजिए. दैट्स नॉट देयर. इसीलिए उनके जो एजुकेशन सिस्टम का, उनके जो असेसमेंट का तरीका है, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हियर व्हिच वी अप्लाई. और जहां बच्चे को जो बुक पढ़ने का मन करे वो बुक पढ़ता है. इट्स नॉट कि गवर्नमेंट ने 5 बुक्स आपको दी हैं, उर्दू की एक दी है, अंग्रेजी की एक दी है, मैथमेटिक्स की एक दी है, and you have a science book and you have a social studies book, and you are limited to those books. This is happening only in South Asia, particularly in the state of Jammu and Kashmir. And I'm sorry to say that the previous governments, due to their vested interests, this is their fault, which you people are presently facing. And I don't know why this writ petition, which has been referred to in the notification by the government of J&K presently, has not been challenged to the highest level, that's the Supreme Court of India. I'm very astonished to know about it. It has not been challenged till date, or you people have not approached the Supreme Court of India, whereby the Supreme Court is the focal center to examine this education policy. A very important point was raised by Mr. Wasim Javed, whereby he referred to the para 17, जो उसमें कहा गया है कि this point could have been examined by the Supreme Court. This point cannot be examined by a high court of a particular state, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर हाई कोर्ट को एक महदूद नजर रहती है कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का पिछला जो तरीका है वो क्या रहा है, और आगे का जो जहां ये जा रहे हैं इसका स्टेज क्या है आगे जाने का. This point and this writ petition, whereby unfortunately an unfortunate order has come against you people. You people should not have stopped there. You people have gone to the highest court of the country, the Honorable Apex Court of the country. And I am pretty sure after going into that order, after going into the contents of the writ, which I read in a short span of time because I was given a short period of notes by Mr. Shaukat. So I read the contents in a very precise manner, and I think the Honorable Supreme Court, and there is a huge scope to challenge this
order before the Honorable Supreme Court of the India by way of a special writ petition or by way of a writ petition, simple writ petition in the Supreme Court of India. तो ये रही एक बात. दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक एजुकेशन आर्टिकल 21 I am sorry to interrupt. I would request you to join again if this call gets disconnected, and we may connect it because this is for 40 minutes only. Irshad sir, you continue, please. So I was on to the education when the Article 21 of the Constitution was amended and Article 21A was inserted. That is the compulsory education. And subsequently, in a Supreme Court case, the Society of Unaided Private Schools versus Union of India, the private schools and the other government schools, they were directed that 25% of the intake should be from the unprivileged schools. And in Lord Krishna's school, whereby that was a fire mishap happened, and the Honorable Supreme Court laid down exquisite guidelines to be followed by the private schools. And in numerous judgments of the Honorable Court, whereby the sword has always been on the private schools. The private school teachers, the private school owners, they have been always been demonized. हमारा जो ये माइंड सेटअप है यहाँ का, पर्टिकुलरली साउथ एशिया का, यहाँ पर एक इस चीज को कि बजाय इसको एक एफर्ट समझ लें, लोग इसको समझ रहे हैं कि perhaps the private school owners they are exploited. So after that case, landmark judgment which I remember is the Avnish Mehrotra versus Union of India. He was also running private school, whereby he had challenged the directive of the Bihar government. Bihar government had issued a notification whereby certain essays, or I will say certain topics of a particular were removed due to some ethnic background. Consequently, he challenged that order before the Honorable High Court of Patna. Honorable High Court of Patna that upheld the state action, saying that it's a valid action. It could lead to certain ethnic clashes or something like that, but only after going to Supreme Court of India. Supreme Court of India that these topics were fundamental in making the students understand that caste system is very bad in our society. And usi judgment ko leke, I am pretty sure that this writ order, which has been passed by our Honorable High, there's a huge scope to challenge this order before Honorable. First aspect. This was first aspect. Second aspect. The bifurcation, the trifurcation, or whatever we call the segregation of the Union of India into particular sectors, that's the South sector, West sector, East sector, or North sector. If we go towards the South India, you people have gone there, you people have experienced, you people have traveled across India. I think you might have seen much liberalized approach, much open mind as South India is concerned. And approach from South India towards North India, a kind of a radical approach, a kind of a radical mindset lies there in the minds of the people. And this is your duty, the duty of private school owners, the duty of owners of a publishing department or a publisher. This is his duty to play a dedicating this mindset whereby a private school owner, a publisher is treated or is viewed like a capitalist rather than a reformist. This is very important. A very important point I am making here is that you yourself, the private school owners, the owners of publishing houses, or some other body who has a stake is in this education system, he should be seen by the people, by the parent, as a reformist or a helping hand. But unfortunately, here in J&K, the private school owners or the publishers, they are seen as capitalists who are exploiting. This unfortunately is a demonizing factor which still exists here in J&K, particularly in Kashmir. And a very big part has been played by the
erstwhile government in this? Who had Irshad best Sahab, justice? Yes. Irshad Sahab, I would request you to throw light upon the various judgments, High Court judgments, wherein the state order was overturned by the respective high courts of different states regarding the same issue of the private publisher books. You people are very busy. I will just take your 5 minutes before reaching that. No, So- absolutely fine, because we understand everybody is on the panel. That's why I'm saying that we are into some topic, a particular topic. We would like to stick to that topic about this, and we respect your opinion. And third aspect I would like to comment here, and that is that who is at the ground level, who frames the curriculum. For example, it is framed by an education minister, by a bureaucrat, by some other body. He is not at the ground level. A bureaucrat is not teaching at the school. A bureaucrat is not running a school. It is the school owner. It is the other stakeholders, the teachers. They people know what should be taught in the school and what's liked by a student. This fact that whereby a publisher or a school owner who has no say so far as curriculum building or curriculum setup is concerned, this violates the Article 14 of the Indian Constitution. And why does a publisher owns a publishing house? It's not only that he's going to run for profit. No. Everybody in the subconscious of his mind wants to serve the society. It's not only the greed of money that runs people. No. There in the subconscious of your mind, there is an emphasis in your heart, in your mind, that I'm going to serve the society. I'm going to serve the future of my country. I'm going to serve the future of my state. You people should be the stakeholders who will decide what should be taught to the children. Exactly. What kind of nutrients does a child need? Does he need carbohydrates? Does he need fats? Who is going to decide that? By a person who is at the very ground level. It is not by the person who is at the last ladder of the helm of affairs. It's not going to be decided by him. It's going to be decided by the person who is at the grassroots level. And it's the school owner and it's the publisher who knows what kind of content is coming and what kind of content does our society need. For example, we are teaching that very poem of 1980, Titli. No, you are going to teach a poem today which touches social media, which touches coding, which touches computers, which touches everything that should be covered by that poem. But that poem is not being allowed to be played in school. That book is not allowed to be in the school. It is being decided by some person who is withholding that poem of 1980s in his air-conditioned office. Third aspect, I'm coming to that. Now, there are state directives. The education was, prior to the inclusion of the education in Article 21A as a fundamental right, it was in state directives. Thereafter, India thought that there's dearth of an education policy whereby a kind of an inclusive approach should be given. And as a result, the amendment was brought in. And thereafter, various governments of various states of the country passed various these circulars, notifications, SROs, giving a liberalized approach to the education policy. Some of those were also challenged. For example, in Kerala, there was a notification that certain topics which include the propagation of these non-veg foods or something like that, they should be banned. But subsequently, a group of civil society, they went to the Honorable High Court of Kerala, and Honorable High Court of Kerala quashed that order, saying that this is the choice and this should be taught in the school. What does a person need? He has a choice, and this choice should be taught to the children who can become tolerant towards the other choice. I am a vegetarian, he is a non-vegetarian. I respect his domain, he will respect mine. This was held by the Honorable High Court of Kerala. And in the government of a
particular framework, a particular whereby belonging to a particular sector only be Irshad Saab, can you please unmute your mic? Irshad Saab, I think you have fluctuation in Yes. network. Okay, Yes, Irshad okay. Saab. Is it fine now? Yeah, it is fine now. Yes, the last point which I will refer from the judgment of the Honorable High Court of Delhi. Am I properly audible now? Yeah, you are audible. The government There- of Delhi passed that by employing particular set of teachers, suppose Hindi teachers, they should belong a particular set of caste or particular set of educational setup or particular university setup. That was also challenged before the Honorable High Court by some teachers union, that was struck, saying that this is violative of the Article 14 of the Constitution. Everybody has a say in the education sector. It is not run as an industry. It's not an occupational industry. Education sector is a very sacred and holy sector. Similarly, I think the government of J&K, keeping in view those judgments of various countries, I think there is a need to withdraw this notification and allow proper part private sector. I would say private, give them a 30% put in their curriculum. You are not going to teach realistic society to a sector that an 8th class student or a 6th class student, I must say that 2nd class student follows Elon Musk on Twitter. With those quotes, in my opinion. Thank you all. Thank you so much, Irshad Saab. It was really a valuable opinion from your side. And I would thank all of you for your comments. Now, I would like to have the closing comments by everybody. And I would request you to stay in that 30-second limit so that we can close this session. War Saab, starting from you. हाँ शौकत साहब, क्लोजिंग कमेंट में आप सुनना क्या चाहते हैं? About देखिए session सवाल begin. ये है चांद पे जमीन खरीदने की न्यूज वायरल है, लेकिन लाखों बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है। ये कोई न्यूज नहीं है, ये कोई ट्रेंडिंग मामला नहीं है। इस वक्त कितना अच्छा पैनल आपने यहाँ बुलाया है। जान साहब, वसीम साहब नून पब्लिशर्स हैं, खुर्शीद महाजन साहब सीनियर हमारे जो है एडवाइजर हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, मनसोत्रा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के, वकील साहब ने कितने अच्छा अंदाज से कहा। आज भी मैं हाई कोर्ट में था, आज भी एक बेंच में केस लगा हुआ था और आज भी एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब के लिए प्रायोरिटी थी कि उसको एजुकेशन के खिलाफ ही अपना व्यू पॉइंट रखना है। सवाल यह है कि ऑलरेडी डिवीजन बेंच में ये चैलेंज हो चुका है। 6 फरवरी को इसकी डेट पड़ी है। इन ए वे द मैटर इज सब जुडिस। अब ये दूसरी बात है कि आजकल सरकार जो है इतना एग्जर्ट कर रही है कि इनके लिए हाई कोर्ट की अहमियत क्या है। पिछले 1 महीने के दौरान हमने 7 ऑर्डर्स लिए हैं हाई कोर्ट से। 4 अलग अलग बेंचेस ने वाज़िह तौर पे क्लियरली सरकार को डायरेक्शन दी कि बच्चों के आरआर इशू करो। अभी तक एक ऑर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। उल्टा आज एडवोकेट जनरल की तरफ से जो आर्गुमेंट्स रखे गए, कहा गया वो यही था कि अगर आप इसको आज ही ये जो है आप इसको आज ही डिसाइड नहीं करेंगे और रिवोक नहीं करेंगे तो
ये कल कंटेम्प्ट के लिए जाएंगे। ये आज कोर्ट में आज यही जो है आर्गुमेंट्स हो रहे थे। सवाल ये है, किताबों का मामला, शौकत साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, बहुत अच्छा प्रोग्राम जो आपने किया, लेकिन गलती सारी उन लोगों की है जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं। हमारी एडवोकेसी नहीं है, हमने आवाम को आज तक बाखबर नहीं किया है। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ एडवोकेसी हमारी बहुत वीक है। लीगल जो हमारा डिफेंस है वो भी काफी वीक है। इसी वजह से ये तानाशाही और तुगलकी आर्डर हम देख रहे हैं। अदरवाइज ये जो है 11 जज बेंच जो जो टीएम पे मशहूर जजमेंट है, अगर आप उससे भी Yes. रूट्स ले लें, अगर आप उसकी तरफ जाएंगे, ये खुलम खुला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की वायलेशन है ही। बल्कि मोदी जी जिसको बराबर डंडोरा पीटते रहे एनईपी का, ये एनईपी की बेसिक पॉलिसी के खिलाफ है। आप देखिए जी कोई स्कूल है जहां पे कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। मुन्नी इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली, जहां कोई किताब पढ़ाई नहीं जाती, उल्टा 5वीं जमात में एनसाइक्लोपीडिया बच्चों को दी जाती है। एमबीबीएस की किताबें 7वीं जमात में पढ़ाई जाती हैं। व्हाट यू विल डू विद दो स्कूल्स? पब्लिशर, इसी वजह से मैंने कहा ये बैकबोन पूरे एजुकेशन सिस्टम का है। और पब्लिशर की पहले इमेज क्या कर दी, इनको नॉर्मल ट्रेड वाला बना दिया। जैसे ये भी जैसे वो चाय चीनी वगैरह बेचने वाले हैं। ये Yeah. यहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता इस इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया गया। उसके बाद स्कूली निजाम को कमजोर किया गया और एक कैंपेनिंग ऐसी चलाई गई कि अब हम इतना कुछ बोल रहे हैं कि ये अहम सेक्टर है, लेकिन मानने के लिए कौन तैयार है? इसलिए जरूरी है, ये दचका जरूरी था, ताकि हम भी समझेंगे, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। हम इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। और मैं आखिर पर सिर्फ एक ही बात कहूंगा, सरकार के ऑर्डर तब ऑर्डर होते हैं जब हम लोग मानेंगे। जब सरकार का ऑर्डर नहीं माना जाएगा, वो कोई ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर इज व्हाट पब्लिक इज रेडी टू एक्सेप्ट। ऑर्डर इज नॉट ए ऑर्डर इफ पब्लिक डज नॉट एक्सेप्ट। आप किताबें लगाइए, किताबें शौक से लगाइए। मैं सारे प्राइवेट स्कूल वालों को कहूंगा किताबें लगाइए। देखते हैं कि ये गुंडे और ये जो खुल्लम खुला वायलेशन हो रही है कानून की, एजुकेशन पॉलिसी की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। वकील साहब जानते हैं, प्रीवी पर्सस केसेस में डिस्कशन इसी चीज पे था, वेदर पार्लियामेंट इज सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, एंड इट वाज हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ये बच्चे का हक है, ये स्कूल का हक है, ये पब्लिक का हक है, ये पेरेंट का हक है, ये किसी ब्यूरोक्रेट का हक नहीं है। आप खामाखा पे चूड़ियां लगा के बैठे हैं कि सरकार ने एक 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 जो है टिश्यू पेपर पे ऑर्डर निकाला। ट्रीट दैट एज ए टिश्यू पेपर। अपनी किताबें लगाइए। सारे स्कूलों को मैं कहूंगा कि किताबें लगाएंगे, बाद में कोर्ट में देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वार साहब, बिल्कुल फैक्चुअल बात करने के लिए, और ऐसा जाहिर हो रहा है कि आप दिल से बात कर रहे हैं बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। एंड महाजन साहब, आपसे मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। शौकत साहब, सभी पैनलिस्ट मेरी बात को एक्नॉलेज करेंगे, जितनी भी बुक्स प्राइवेट पब्लिशर्स के थ्रू आती हैं, दे आर ओनली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी करिकुलम। एनसीईआरटी करिकुलम जी के बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो हम कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे, हम वही पढ़ा रहे हैं जो एनसीईआरटी हमारे को बोल रही है, और उसको हम जरा उस लेवल पे लेके आ रहे हैं कि जो इंटरनेशनल नेशनल मार्केट के अंदर चलेगा। जी जी, That थैंक यू are my सो मच। ये final बिल्कुल छोटी बात ही, पर लेकिन बिल्कुल वैल्यूएबल बात की, और एकदम सटाक बात आपने कह दी। खुर्शीद जान साहब, आप प्लीज अपने क्लोजिंग कमेंट्स हमें बताइए। तो यही कहेंगे कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है, जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में सारे पब्लिशर स्मूथली बिजनेस कर रहे हैं, सारे स्कूल वाले पब्लिकेशन लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इस स्टेट को भी एंजॉय करने दीजिए। यहाँ के बच्चों को भी चॉइस दीजिए कि वो अपने मन मुताबिक किताबें पढ़ें, आगे जाएं, आगे जो हाई क्वालिटी कंपटीशन है उसको उसमें मतलब compete करें। कोई बैन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं भी होना चाहिए। जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में सप्लाई चल रही है ऑल ओवर इंडिया, यहाँ भी J&K में भी वही होना चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। और वसीम साहब। जी सर, मैं इख्तिताम पे यही कहूंगा और कश्मीरी में कहूंगा कि मतलब अपने जो कश्मीरी पेरेंट्स हैं तिमन मन भी यी कि
मतलब बेशक अशु बासान की जो गवर्नमेंट किताब सो सस्त तो प्राइवेट किताब द्रज मगर पेरेंट्स पज सोचुन गौर फिक्र कर कि अस मा पे स्रोग पगह द्रोग यह बहुत बड़ा एक स्लोगन है अस गोस स्रोग पगह द्रोग पेन युस बच सिंदिस कैरियरस जत वात। बिल्कुल वसीम साहब, आपने बिल्कुल वैलिड बात करी। एंड इरशाद साहब, एडवोकेट इरशाद साहब, आप फाइनली क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और आपकी क्या अपील रहेगी लोगों के लिए? आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि कभी भी मेरी जरूरत हो, आई एम एट योर डिस्पोजल, प्रो बोनो फॉर दिस कॉज। थैंक यू सो मच इरशाद साहब, आपने बड़ी बात कही। एंड फॉर मी, इरशाद साहब फिर से बोलेंगे प्लीज, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैंने बोला कि कभी भी मेरी जरूरत पड़े इस कॉज को आगे ले जाने के लिए, टू गिव एजुकेशन, क्योंकि अल्लाह ने मुझे, अल्लाह हैज ब्लेस्ड मी विद अ डॉटर and I want to see her a bright future so far as education is concerned, and for that cause I am pro bono available, free of cost available to you people for this cause at any forum in India. Thank you so much. This is a wonderful statement by you, and we would like to take your support always. And for me, I would conclude this whole session by thanking you all. And I can see that there is a feeling among the people, among the mass, that something good has been done for their students. But as a whole, if we look into it, it is not just a book. I have always maintained that it is a package. This book comes with a lot of things which have been discussed in this panel, be it the digital support, be it the trainings, be it everything what is associated with the book. So everybody, all जितने भी हमारे लोग हैं देखने वाले, उनके लिए मेरा यही मैसेज आएगा कि जब भी आप इस चीज को लेकर सोचेंगे तो गौर व फिक्र जरूर करिए कि ये किताब के साथ हमें अपने बच्चों को और क्या क्या मिल रहा है। कहीं हम कभी भी किसी मेले में जाते हैं और एक दिन में या एक घंटे में हम हजारों रुपया खर्च करते हैं अननेसेसरी चीजों पे, और वही जब हमारे बच्चों की एजुकेशन की बात आती है, हम क्यों इतने, आई वुड डायरेक्टली से कि हम क्यों इतने कंजूस और सवालिया हो जाते हैं और लेबल कर जाते हैं अपने स्कूल्स को, अपने पब्लिशर्स को, बुक सेलर्स को, कि शायद पता नहीं खुदा न खास्ता क्या गलत हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एवरीबॉडी, एंड Thank you. अस्सलाम वालेकुम।